Okay, so Assalamu alaikum everyone. This is a session of Film Desk, and in today's session, we're going to discuss some more details and some more content regarding the productions. Like in previous session, we've discussed about the pre-production, and now we're going to discuss about the post-production and some more things which are very much important in the session of Film Desk. Okay, so let's move towards the slides. This all we have already discussed. So if you know, if you want to see these types of things, and if you want to know about this previous thing, so you can check out our recordings, recorded sessions on our official YouTube channel as well, and we have already shared the links through the email as well, which is Technolitrate official 365 at gmail.com. Okay, so I want the participants to show an active participation today's session, because this is also a very important session, because as you know that we are going to an end of our courses, so we need to cover up the things, not actually cover up, but I want to discuss some more thing in very short time. मतलब कम से कम वक्त पे ज्यादा चीजें चीजें अगर हम डिस्कस कर लें तो ये आप ही लोगों का जो है वो बेनिफिट होगा. So I want you all to respond me via open a mic, or you can type any message in the comment box like understood or noted, or if you have any type of question as well, so आप वो भी पूछ सकते हैं. डेफिनेटली आप पूछें, ताकि आपके जैसे सवाल जो भी होगा वो अगर किसी और पार्टिसिपेंट के दिमाग में होगा, so you have got the answer, so he also get the same answer. Okay, so in today's session, we will discuss about the cast, but first I'm going to give you a short recap in the with the things which we have discussed in the previous session. So we have discussed about the formats, like in which formats the films, the videos are normally shooted. So these are the four type of qualities which normally being considered to shoot videos. Among these four, the best one is 4K quality, which is the highest quality, and it will going to show the presentation. It will going to show the visual more clearly, more accurately, and more sharply. The 4K quality, which have the pixels 4000 by 2160. So this is a very highest video quality which is being chosen by the big institutes of filmmakers or the professional workers. Then we have the FHD quality, which is normally being available in the video cameras, in the low budget video cameras, and in some mobile phones as well. And it also gives you very much good and very effective quality, which is very much considered to shoot the normal videos like for YouTube channels as well. HD quality and SD quality are very much commonly used quality, which are more considered to the peoples which are having the low budget cameras, and they don't have the higher level equipment, so they used to give the quality of HD and SD in their videos. And there are four types of video formats which are being which the normally being created. The first is like MP4 quality, then we have the log, and then we have the raw. The first is like the video when it was previously in the past years, which when the video was shooted, so it was in a raw format, then it will convert it into the log, and then it will convert it into the final stage, which is MP4, which are normally being used. आजकल की जो वीडियोस आप देखते हैं किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर या कहीं पर भी, तो वो MP4 फॉर्मेट पर होती हैं, और उस वीडियो की जो ऑडियो होती है उसको MP3 फॉर्मेट कहते हैं, which is the audio format. Then we have the four type of equipments that are being used to shoot the videos. Like cinema camera is actually called as a DSLR, or high professional cameras, which are normally chosen to shoot any web series, any TV shows, any films. So these are those cameras which fulfill the requirements of cinema. So second, we have DSLR, which is very much common, and it is used to shoot the short films or short term projects. उनको shoot करने के लिए DSLR को बहुत ज़्यादा appropriate समझा जाता है. Then we have handy cams and mobile phones. These are normally being used by the normal users and the normal video makers. So they used to use mobile phones and handy cams to shoot their videos. Okay, we have discussed these all in detail in the previous session, so you can check it out as well there only. Then we have the log and raw format, which we have already discussed, is these whole descriptions in a detailed form and with the daily life examples as well. So आप इसको भी check कर सकते हैं जिनको जो लोग पिछले session में absent थे. Then we have the three types of image. I've shown you like what is actually a difference between these three video formats and how the images are look like in these three forms. So आप देख सकते हैं यहाँ raw format में कैसी है, या log में, and recording जो video आजकल MP4 formats में होती हैं. तीन types of videos formats अलग अलग होते हैं, like how they are different from each other. So you can just judge it by this image which I am showing you on my screen. Okay,
Then we will have, now in today's session, we're going to discuss about the cast and some more, you can say, deep versions and deep elements which are being used in the field of filmmaking. So यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों को पता भी होंगी, but कुछ चीजों को आपको सिर्फ by name पता होंगी. You should know actually what they are used for, and what is actually the purpose of those things in the film. So उनका purpose, उनका use, उनकी सही place जहाँ वो use की जाती हैं, उनका सही time. So these all are being mentioned in today's session. So I hope you would be very much clear these things in short term, because I want you to show your participation ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग ये चीज समझ रहे हैं. So first is like cast. What is a cast? The cast is simply those people which are used to act in a film. फिल्म की जैसे कास्ट होती है, जो फिल्म में काम करने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, the actors are normally fulfilling any sort of character. So these all actors which are being you can say working in a project, either it's a film, either it's a TV show, either it is a web series, the person, the people, those are working on that series, so these are called as the cast of the film. यानी कि वो लोग जो फिल्म पे काम कर रहे हैं. Okay. Then we will have the crew. What is a crew? Crew actually, it is a other sort of thing. Like crew members are your cameramen, your assistant director, your people who are working behind the screen, behind the, you can say, your project. मतलब आपके जो भी spot boys होते हैं, जो भी आपके जो, you can say, like assistants and makeup artist, these all are the crew members which are working behind the screen. मतलब जो पीछे काम करते हो, जो कि टेक्निकल ऑफिसर्स भी होते हैं, any sort of thing which he performing out of the screen, मतलब आपके स्क्रीन के पीछे, मतलब वो फिल्म में नहीं होते, वो फिल्म बनाने में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज क्रू. कास्ट होती है जो फिल्म में एक्टिंग करते हैं, जो फिल्म में, जो फिल्म के अंदर जो पर्दे पर जो दिखते हैं, दीज आर द कास्ट. द क्रू आर द पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द स्क्रीन, तो उसे हम क्रू मेंबर्स कहते हैं. ओके. सो वी विल हैव इन टुडेज सेशन, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारे जो है, यू कैन से दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु आर fulfilling their jobs. So these are very much difficult when you hear these words. मगर इस सेशन में हम लोग इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे, like what are they and what sort of work they are doing in the films. Focus pullers, they are responsible for all of the camera equipments. They must ensure that all shots are sharp and in focus. They must be in the first member of the camera department to arrive on set to set up camera equipment and lenses. आपने देखा होगा ऑब्वियसली, कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट शूट होता है, कभी कोई सीरीज शूट हो रही है, तो उसके लिए एक बहुत सारे प्रोफेशनल कैमरास एज वेल एज नॉट ओनली कैमरास बट द वेब सीरीज डिमांड्स द कैमरा मैन एज वेल. सो यहाँ पर एक कोई नॉर्मल एक या दो कैमरा मैन नहीं होते, यहाँ पूरी एक टीम होती है कैमरा मैन की. सो दीज आर कॉल्ड द फोकस पुलर्स. उसमें ये होता है कि दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर शूटिंग द फिल्म. दे आर रिस्पॉन्सिबल टू शूट ईच एंड एवरी शॉट ऑफ द फिल्म. मतलब हर एक शॉट में उनका रोल प्ले होता है. सेकेंडली, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू शूट द सीन एक्यूरेटली एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्टर. डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसको उस सीन को शूट करना होता है. Third thing is like they are being responsible for any sort of damages, for any sort of repair, any sort of camera equipment or lenses. जो भी वहां पर आप देख सकते हैं कि जो कैमरा का जो पूरी अथॉरिटी होती है, कैमरास की, लेंसेज की, उनके ट्राइपॉड्स की, उनके किसी भी तरह की जो इक्विपमेंट्स जो कि रिकॉर्डिंग से ताल्लुक रखती है, दे आर बीइंग पार्ट ऑफ अ रिकॉर्डिंग. either it is a camera, either it is a frame, either it is a, you can say, lights. तो वो सब चीजें जो है वो इनके जो है वो वर्क के अंडर आती हैं. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स. ओके. अगर आपको नहीं समझ में आए, सो यू कैन कमेंट मी योर क्वेश्चन. ओके, क्योंकि थोड़ी चीज डिफिकल्ट है, तो आपको ये चीज समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा. The Digital Intermediate Colorist (DIC). It is a 21st century version of color timer, which means they digitally manipulate the color in a film as part of the post production process. Obviously फिल्म के बनने के बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में जाती है. Then they will going to make, इजी वर्ड में समझाऊं तो, देन दे यूज टू एडिट द पिक्चर अगेन, और जहां जहां पर उनको कलर रिलेटेड चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो एक्चुअली डीआईसी यानी कि डिजिटल इंटरमीडिएट क्लोरिस्ट के जो है वो वर्क होता है. ही विल गोइंग टू इंश्योर द colors, the theme, the background, and if in some places the
film should be in a darker mode, कहीं पर dark mode show करना है, कहीं पर colors को dim करना है, कहीं पर colors को बहुत ज़्यादा bright करने हैं, the area which demands to be colorful, so he should ensure that part of the film, like कि वो चीज जो जो स्क्रीन की डिमांड है उसको फुलफिल कर रहे हो. अगर हॉरर थीम है तो ऑब्वियसली वहां पर डार्कर मोड होता है. नॉर्मली हॉरर फिल्म्स के अंदर आपने देखा होगा, हॉरर जॉनरा के अंदर आपने देखा होगा कि कभी भी कोई इतना ब्राइट चीजें नहीं होती. दे शूट द फिल्म इन अ सॉर्ट ऑफ डार्कर मोड्स, और हमेशा अंधेरा और इस तरह की चीजों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है बिकॉज इट इज अ स्क्रीन रिक्वायरमेंट. सो ही शुड इंश्योर द दिस थिंग रिलेटेड टू कलर्स. तो इसका जो है वो इन लोगों का जो है काम होता है, इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि जब पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म आती है, सो ही should ensure the part of the colors, the theme, the you can say the requirements which are demanded by the screen and the genre. Okay. Then we have the grips. Make sure that what the director and director of photography DOP wants to achieve on a shoot is possible. While director think of the artistry of the shots, grips work out how they are going to move the cameras to make that happen. बहुत सारे इनका इनकी ये अथॉरिटी होती है कि एक डीओपी होता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी. अच्छा, वहां पर जितने भी कैमरा मैन और जितने भी जो है वो फोटोग्राफर, जितने भी लाइट मैन, जितने भी जो भी इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, उन सबका एक डायरेक्टर होता है विच इज कॉल्ड एज डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, विच इज डीओपी. ओके. सो जो भी डायरेक्टर्स की डिमांड होती है, डायरेक्टर विल जस्ट डायरेक्ट द सीन, डायरेक्ट द शॉट, कि उसको इस तरीके से शॉट चाहिए कि कैमरे का फ्रेम इस तरह ओपन होगा एंड देन इट विल गो टू फोकस ऑन द हीरो एंड देन इट विल जूम आउट. तो इस तरह जो है वो एक्सप्लेन कर देता है उनको किस किस्म का शॉट चाहिए, किस किस्म की अपना यू कैन से सीन की रिक्वायरमेंट क्या है. सो इट जस्ट डायरेक्ट द थिंग एंड the you can say the grips are actually the person which will make this thing possible. उनको फिर जो है वो अपना इनपुट देना पड़ता है और फिर डायरेक्टर्स की डिमांड पर और उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ही शुड इंश्योर दैट कि वो सीन उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही बना जाए. जैसा उन्होंने डायरेक्ट किया है कि पहले शॉट ऊपर ऊपर से नीचे आएगा एंड देन इट विल जूम आउट जूम इन. तो मतलब इस तरह के जो है वो उनकी यू कैन से द डायरेक्टर शुड डिमांड दीज थिंग और फिर इसको प्रैक्टिकली जो है वो grippers को बनाना पड़ता है. एंड द डीओपी इज ऑल्सो बीइंग इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम. ओके. तो ये तीन चीजें जो कि क्रू मेंबर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. सो आई हैव शेयर्ड यू इन दिस स्लाइड. So if you all are clear, so I'm going to move towards the next thing. अगर आपको सब चीज समझ में आ गई है, ग्रिपर्स, फोकस पुलर्स और ये DIC, so I will going to move towards the next part of the presentation. I just want you to mention in the chat box, और आप माइक ओपन करके भी अपने आप को अनम्यूट करके भी अपना जो है वो फीडबैक शेयर कर सकते हैं. अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप जरूर बता दें अभी ही, वरना बाद में फिर दोबारा रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेगी. सो यू विल गोइंग टू हैव you will going to waste so much time on this. So kindly respond me in this session and now only. Okay, understood, noted. Okay, noted. Okay, so 3 to 4 students have responded me. Understood. I want rest to also respond me so that I can show that you are present in the session. So next thing is like DP camera operators, which is same, which is discussed already. DOPs, assistant to camera. हर कैमरामैन के असिस्टेंट्स भी होते हैं. नॉर्मली इट इज आल्सो पार्ट ऑफ क्रू मेंबर्स. फोकस प्लस डिस्कस कर चुके हैं. असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑब्वियसली एक डायरेक्टर होता है एक फिल्म में, एक प्रोड्यूसर होता है, एक्टर्स होते हैं, एंड वी विल आल्सो हैव अ फील्ड ऑफ और यू कैन से अ पोजीशन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एज वेल. सो दिट्स अ वेरी मोस्ट कॉमन थिंग. लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर तो डेफिनेटली जो हर फिल्म का पार्ट होता है, विच इज यूज्ड टू हेल्प आउट the needs of director, and it is also he also shows the involvement regarding his position. Then we have the lights and gaffers, which is same, the lightmen. और किसी सीन्स में अगर आपको लाइट की जरूरत होती है, कोई आउटडोर सीन है, कोई इंडोर सीन है, कोई हाउस होल्ड सीन्स है, तो उसमें जो है ऑब्वियसली लाइट की जरूरत होती है, एंड दे विल हैव अ लाइटमैन एज वेल. साउंड रिकॉर्डिस्ट, ऑब्वियसली जैसे आप म्यूजिक में सुनते हैं कि म्यूजिक की पिच हाई पिच स्लो करनी पड़ती है म्यूजिक की, तो यहाँ पर भी साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं. दे यूज टू यू कैन से दे यूज टू manage the volume, they used to manage the sound. अगर कहीं बहुत screaming noise चाहिए, so they will going to make the pitch high. और यहाँ पर कोई internal details भी होती हैं, so we don't need to know these things. बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर कौन कौन जो है वो काम कर रहा है. ओके. so but I just want to make this thing clear to you all कि एक फिल्म हो या एक कोई भी अगर एक मोशन पिक्चर कह सकते हैं, जो कि एक सही वर्ड है फिल्म मेकिंग के एतबार से. so
the series, the web series cannot be make, either it is a film, either a TV show, anything which is being on air on the TV. So it cannot be made without these all peoples, without these all parts of the film. सिर्फ actors ही नहीं होते, सिर्फ cast ही film को successful नहीं बनाती, but the people who are working behind the picture, they are also being playing a very large and a very vital role for the film. Okay. Then we have the makeup artist. So makeup artist is a very most, you can say, important person on the set, क्योंकि मेकअप का खास ख्याल रखना पड़ता है हर सीजन का, हर वेदर के एतबार से, कॉस्ट्यूम से, कंट्रास्टेड मेकअप। तो ये जो है वो मेकअप आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ही शुड शो the character, the an actor larger than life on the screen according to its role. उस role के according उसको उनका makeup को select करना पड़ता है, उसके costume के according, weather, season के according, film के genre के according. So ये सब चीजें जो है वो matter करती हैं while having a makeup on your face, while having a makeup which was applied by a makeup artist on the actor or on the cast. Okay. So ये मेकअप आर्टिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिल्म्स के अंदर। नॉर्मली कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मेकअप्स नॉर्मली ऑडियंस को पसंद नहीं आते। कुछ लोगों को जो है वो जब उनके फीडबैक्स आते हैं व्हेन द फिल्म मेकर्स रिसीव द रिव्यूज, तो मेनी पीपल विल कंप्लेन अबाउट द मेकअप एज वेल समटाइम्स के उस जगह पर उस फलाने का मेकअप अच्छा नहीं था, एंड इट वाज नॉट बीइंग कंट्रास्टेड विद द जॉनरा। आप दिखा कुछ और रहे हैं बट द मेकअप इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है फिल्म का, जिसका खास ख्याल रखना पड़ता है, जो कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेकअप आर्टिस्ट की। ओके। Then grips we have discussed, which is the director of photography, and they are all working on the scenes, shots, which has been instructed by the director. And then we have the art director. Art director is responsible for all type of things like sound, like photographies, like you can say costumes, makeup artists. So these he is called as art director. Okay. उसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास editors, which are normally used to edit the picture after it will be in the post production. And then we have the DI colorist, which I've already discussed, which are being related to the color. He will use to ensure the color which is being according to the genre. Then we have the animator. In some scenes we need to animate the things, so वहां पर जो है वो animator का काफी यूज होता है। अच्छा, यहाँ पर के पास कुछ हमने 3 से 4 क्रू मेंबर्स को हमने जो है वो डिस्कस किया है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं फिल्म्स के अंदर। मगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि यहाँ पर चीज खत्म होती है। इन सम फिल्म्स द फिल्म मेकर्स आर नॉर्मली यूज्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल। सो कभी कभी आजकल के फिल्म्स के अंदर ग्रीन स्क्रीन का बहुत यूज हो रहा है, और जो है वो नॉर्मली जो लोग जो है वो एनिमेटेड फिल्म्स बनाते हैं, दे आर नॉट द सीन्स आर नॉट बीन एक्चुअली शूटेड एट दैट लोकेशन। वो स्टूडियोज में शूट होते हैं मगर उसमें ग्रीन स्क्रीन का यूज होता है, एंड देन दे रिमूव द बैकग्राउंड एंड दे यूज द बैकग्राउंड विच दे वांट। तो उसका भी हमारे पास एक अलग सा जो है वो एरिया है विच वी वांट टू कवर दैट। बट यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बेसिक चीजें समझें कि जो लोग फिल्म्स के अंदर काम करते हैं, आप देखते हैं मेकअप करते हुए एक्टर्स को, सीन्स देखते हैं, सो who are actually being responsible for these things. So I have discussed this with you in today's session. Okay. Now we're going to move towards the next thing, but उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, because it is a very important thing. बाद में फिर आपको जब हम जज करेंगे by the home task, so फिर आप लोगों को जो है वो इश्यू होगा, and then you cannot able to answer us or you cannot give your feedback. Okay. Now I'm going to move towards the next slide. अच्छा, यहाँ पर एक शॉर्ट सा स्टोरी स्ट्रक्चर है, इसको ये चीज समझ लें। आई होप यू ऑल नो दिस, मगर इसको हम छोटा सा जो है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। लाइक स्टोरी स्ट्रक्चर नॉर्मली 3 पार्ट्स का होता है। फर्स्ट इज एक्सपोजिशन, विच इज लाइक इंसाइटमेंट। इसमें बैकग्राउंड और कभी कभी कहानी फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। फ्लैशबैक नॉर्मली क्या होता है कि आगे की जो हैपनिंग है वो पहले दिखा देना, लाइक फ्यूचर हैपनिंग इज बीइंग शोन फर्स्ट, एंड देन द मूवी विल ट्रैवल टू द फर्स्ट टू द बैकवर्ड, एंड देन इट विल ऑन द पाथ। सो ये मूवी पहले जो है वो फ्यूचर का जो सीन दिखा दे, एंड देन वो वापस बैकवर्ड आकर फर्स्ट सीन दिखाए, एंड इट विल एंड ऑन दैट सीन व्हिच इज बीइंग सीन ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। ओके, तो इसे कहते हैं फ्लैशबैक। सो नॉर्मली जो है एक्सपोजिशन और इनसाइटमेंट्स में नॉर्मली बैकग्राउंड्स और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन आर बीइंग प्रेफर्ड, और some people are normally used to show the plot as well of the film.
Then we have the setback. What is setback? Setback is actually the rising action, the crisis. Like what is happened in the film, कि फिल्म का जो है वो मेन मोटिव क्या था, इशू क्या था. लाइक एग्जांपल लेते हैं हम नॉर्मल सी, कि अगर कोई फिल्म रॉबरी पे बेस्ड है, सबसे पहले रॉबर का प्लान, उसकी जो है वो, उसकी जो रॉबर्स का इंट्रोडक्शन, उनका प्लान, उनका जो है वो रॉबरी की लोकेशन, तो वो सब डिस्कस हो जाएगी प्लॉट में. प्लॉट और उनका जो है वो बैकग्राउंड, उनका पहला पार्ट होगा स्टोरी का. सेकंड पार्ट होगा उनका मेन, जो है उन्होंने जो जो उनका जो मेन मोटिव है, उनका जो मेन काम जो उन्होंने परफॉर्म किया है फिल्म के अंदर, लाइक द रॉबरी. तो द रॉबरी इज एक्चुअली द, यू कैन से, राइजिंग एक्शन एंड द क्राइसिस. अब जो मेन कहानी जो हुई है, अगर उनकी रॉबरी सक्सेसफुल हो गई, सो ये एक तरह से राइजिंग एक्शन होता है, या उनको वहां पर कोई इशू फेस करना पड़ा, सो दिस इज एक्चुअली द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी. एंड देन द स्टोरी विल बी विद, व्हेन द स्टोरी विल एंटर इनटू द थर्ड पार्ट, सो उसमें ये होता है फॉलोइंग एक्शन होता है. उसमें कहानी आहिस्ता से रिजॉल्व होना शुरू होती है. अगर मिस्ट्री की कहानी है, कोई मिस्ट्रिकल जॉनर पे बेस्ड कोई मूवी है, तो उसमें जो है वो थर्ड पार्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मिस्ट्री सॉल्व होना शुरू हो जाती है. एंड द फिल्म वाज बीइंग एंडिंग अप with the climax as well, with the falling action as well. Okay, climax आता है थर्ड पार्ट ऑफ द फिल्म के अंदर, और उसके बाद नॉर्मली फिल्म खत्म हो जाती है, उसके बाद स्टोरी खत्म हो जाती है. सो दीज थ्री आर द पार्ट्स व्हिच आर कंसिडर्ड बाय द राइटर्स फॉर राइटिंग द स्टोरी, और फिर इसको डायरेक्टर्स एक तरह से डायरेक्ट करते हैं स्टोरीज को इन अ practical form. Then you have the, you can say there's some pictures which are being showing you like the, this is like a stream of consciousness. मतलब यहाँ पर normally कुछ ऐसे parts में images में show हो रहे हैं कि जो कि film में important होते हैं, कि अगर कभी कभी आपको normally कोई dialogues नहीं होते, कभी कभी कुछ scenes में कभी आपको कोई act नहीं करना होता, you just have to stand and you just have to give the expressions. आपको एक्सप्रेशंस देने होते हैं. कभी 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 आपने देखा होगा कोई हॉरर फिल्म्स के अंदर अगर सामने कोई ऐसा इविल मॉन्स्टर आता है, the character will going to give the loud reaction. Either it will show practically कि वो भागना शुरू हो जाए, either it will, either he or she will stand still, and you will going to judge the scene by his expression. कभी कभी वो आंखें फाड़ लेते हैं, कभी दे यूज टू pretend himself or herself scared. So इस तरह के जो है वो एक्सप्रेशंस के थ्रू हमें कभी कभी पता चलता है कि आखिर एक्चुअली उस सीन में हो क्या रहा है. ओके, तो इस तरह से हमें कभी कभी एक्सप्रेशंस को फॉलो करते हुए एक्टर्स को कहानी को जज करना पड़ता है. सो दिस इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इन द, in any sort of films or in any sort of series. Okay, so this is just a simple recap for the story structure के ये तो हमने सिर्फ जो है वो शॉर्ट सा बता दिया स्टोरी स्ट्रक्चर के बारे में. देन वी विल गोइंग टू हैव द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज लाइक, you can say, okay, location. What is the location, the costume? This is a very easy thing. ये तो बहुत easy है obviously. तो आप लोगों को पता होगा कि कभी भी अगर कोई चीज शूट करनी होती है, चाहे वो एक मामूली सी वीडियो हो या चाहे वो एक लार्ज स्केल पर एक फिल्म हो, उसके लिए you will be having a demand of location. Location is like, it will have these things like accessibility, availability, facilities, space and weather. आप इन 5 चीजों को देखते हैं जब आप किसी जगह पर शूट करने जाते हैं. किसी भी लोकेशन पर किसी भी किस्म का कोई भी चीज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई स्किट हो सकती है, कोई फिल्म हो सकती है, किसी भी कोई भी चीज अगर शूट करने जाते हैं, वहां पर सबसे पहले आप देखते हैं अवेलेबिलिटी, कि उस जगह पर अवेलेबिलिटी है, मतलब जो हम चाह रहे हैं वहां पर शूट करना वो वहां शूट हो सकता है. फर्स्ट थिंग यू विल गोइंग टू सी, यू विल गोइंग टू एक्सपीरियंस इट. सेकेंड थिंग एक्सेसिबिलिटी. वहां पर अगर हम जाएंगे तो वहां पर हमें अगर कोई चीज, वहां पर कोई चीज, मतलब अगर हमें कोई ऐसा सीन शूट करना है कि एक एक ब्लास्ट का सीन शूट करना है, बॉम्ब ब्लास्ट का, तो वो जगह इतनी बड़ी है कि उसमें वो चीज हो सकती है वहां पर वो सीन शूट, तो वहां पर हम दिखाते हैं एक्सेसिबिलिटी. अब जैसे एग्जांपल ले लें इसके लिए, लेट्स हैव एन एग्जांपल कि अगर हमें एक डेजर्ट का सीन शूट करना है. ओके, अब डेजर्ट का सीन हमने शूट कर लिया. उसमें ये होता है कि डेजर्ट में पूरी जो है वो, यू कैन से, वहां पर जो है वो सारा सैंड सैंड होती है. सो वहां पर अब हमें एक सॉन्ग शूट करना है, तो डेफिनेटली वहां पर अगर वहां पे खड़े होने की जगह होगी, वहां पर स्टेप्स परफॉर्म करने की जगह होगी, तो तभी हम वहां पर सॉन्ग शूट कर सकते हैं ना. सो दिस इज एक्चुअली बीइंग कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी, कि वहां पर हमारी एक्सेसिबिलिटी थी वहां पर सॉन्ग शूट करने की, तभी हमने वहां पर सॉन्ग शूट किया, पर कोई भी इस तरह का सीन हमने शूट किया. थर्ड थिंग इज लाइक स्पेस. अब हमें सीन को शूट करने के लिए वी नीड अ लार्ज स्पेस, अ ह्यूज स्पेस. लाइक अगर हमें कोई
चेज शूट करना है कि पुलिस और रॉबर्ट्स के दरमियान चेज हो रहा है, द cars are rushing on the road and the robbers are rushing ahead of the police, so we need to have a large road, a large highway type road where we don't need any car, any sort of destruction. So the space are also very much matter for shooting any scene. थर्ड इज लाइक फैसिलिटीज, अब वहां पर हम चले गए, अब वहां पर पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, वहां पर ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, चले। सेकंड इज लाइक कि वहां पर उस तमाम ह्यूमन नीड फैसिलिटीज हो, तभी वहां पर सीन पॉसिबल है। चले एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें एक सीन शूट करना है, एक हॉरर सीन, एक हॉरर हाउस के अंदर। सो द सीन इज बीइंग शूटेड इनटू द हॉन्टेड हाउस एंड व्हेन द लोकेशन इज बीइंग चूजन, अब वहां पर उस एरिया में किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है, अब वहां पर क्रू मेंबर्स और कास्ट को एनिमल से भी खतरा है। अगर वो सीन, अगर वो जो है वो लोकेशन जंगल के बीच में है, तो अब वहां पर एनिमल्स से भी खतरा है, वाइल्ड एनिमल्स से। सेकेंडली दे विल ऑल्सो बिंग फियर ऑफ एनी टाइप ऑफ रॉबर्ट्स, के वहां पर चोरी चकारी बहुत होती है, सो वहां उस चीज का भी खतरा है। वहां पर पानी की फैसिलिटी नहीं है, वहां पर रात को स्टे करने की फैसिलिटी नहीं है। अगर रात का सीन है तो डेफिनेटली कास्ट को वहां पर रात स्टे करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है ना रात को सीन शूट करके अब वहां पर ट्रेवल करके वापस अपने अपने जो है वो स्टूडियोज में आते हैं। नहीं, कभी कभी रात के सीन शूट करने के लिए उस लोकेशन पर स्टे भी करना पड़ता है। सो सिर्फ और सिर्फ हम एक्टिंग वाइज चीजों को नहीं देख सकते, हम वहां पर दूसरी ह्यूमन नीड फैसिलिटीज को भी हमें प्रेफर करना पड़ता है फॉर चूजिंग एनी लोकेशन फॉर शूटिंग अप एनी पार्ट ऑफ फिल्म। उसके अलावा वेदर, हाँ वेदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमें कोई ऐसी सीन या ऐसी चीज शूट करनी है और वेदर अप्रोप्रिएट नहीं है, अब वहां पर जो है वो सर्दी का हमें सीन शूट करना है और वहां पर जो है वो वेदर हॉट है, तो ऑब्वियसली वो लोकेशन यूजलेस है। अगर अगर हमने हम अगर एक जगह पे गए शूट करने के लिए, अब वहां पर प्रोडिक्शन है कि वो 4 या 5 दिन वहां बारिश होने वाली है, एंड द मेकर्स विल नो कि हमारा काम 4-5 दिन में खत्म नहीं होगा, वी नीड टू टेक एटलीस्ट 10 to 15 days। तो वहां पर वेदर प्रॉपर नहीं है, सो दे शुड चेंज द लोकेशन और दे हैव टू वेट फॉर द वेदर टू काम डाउन। तो वेदर को भी बहुत ज्यादा मैटर करना पड़ता है एक लोकेशन पर जाने से पहले, एक शूट करने से पहले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि normally actors are used to work in a very high climate के एक सॉन्ग की शूटिंग होती है, नॉर्मली रोमांटिक सॉन्ग्स को शूट करने के लिए यू कैन से माउंटेन्स और ब्यूटीफुल सीनरी की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। सो दीज पार्ट ऑफ द एरियाज आर नॉर्मली बीइंग कोल्ड। सो वहां पर अब जाहिर है वहां पे कोल्ड है, अब कॉस्ट्यूम इस तरह डिजाइन किया जाता है एक्टर्स का, चाहे वो हीरो चाहे वो हीरोइन हो। तो अब कभी कभी एक्टर्स जो को ऐसा भी कॉस्ट्यूम दिया जाता है जो कि बहुत लाइट होता है, एंड द क्लाइमेट एंड द वेदर इज वेरी मच कोल्ड। तो वहां पर जो है वो ऑब्वियसली अब स्वेटर के अंदर तो नहीं शूटिंग कर सकते ना फिल्म की, उस गाने की। आप लोग पता है कि किसी भी किस्म की जब भी कोई चीज शूट करते हैं तो उसके लिहाज से रोमांटिक सॉन्ग है, तो ऑब्वियसली स्वेटर में रोमांटिक सीक्वेंसेस नहीं शूट होते। सो द वेदर, the climate should be appropriate for the nature of, for the body of the actor, for the costume एंड फॉर द कास्ट मेंबर्स। ऐसा ना हो कि सर्दी का मौसम है और वहां पे गरम गरम अपना मतलब पतले पतले कपड़े, मतलब समर वेयर्स को पहनकर वहां पर वो सीन शूट हो। कभी कभी होते भी हैं फिल्म्स के अंदर, तो वहां पर जो है वो एक्टर को काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। सो यानी कहने का मतलब ये है कि वेदर इज ऑल्सो अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर चूजिंग अ लोकेशन एंड फॉर द genre and for the story as well. Then you will have the three things like schedule. Schedule is very important कि obviously एक एक्टर को जब साइन करते हैं तो उसकी डेट्स होती हैं कि इस डेट से इतनी डेट तक, मतलब इस फलाना तारीख से इस तारीख तक ये डेट्स इस फलाने प्रोड्यूसर को दे दी हैं। नाउ ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब प्रोड्यूसर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यू कैन से वाइंड अप द वर्क इन दीज डेट्स ओनली, क्योंकि उसके बाद फिर जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है उस डेट के बाद, और फिर जो है वो एक्टर काम नहीं करता। देन यू हैव द स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन। ऑब्वियसली एक स्क्रिप्ट जब बनती है, एक स्टोरी जब बनती है, तो उसका ब्रेक डाउन किया जाता है, जो हमने डिस्कस भी किया है इससे पहले वाली स्लाइड पे, कि वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है स्क्रिप्ट। पहले उसका प्लॉट होता है, बैकग्राउंड होता है, एंड देन द मिडल ऑफ द सीन, एंड देन द लास्ट। ओके, देन वी हैव द कॉल टाइम। कॉल टाइम ये होता है कि नॉर्मली अगर हमने 15 से 20 लोगों को जो है वो साइन किया है एक्टर्स को एक फिल्म के अंदर, एक सीरीज के अंदर, एंड उसके अंदर जो है वो फर्स्ट डे 1 की जो शूट होगी, फर्स्ट डे की जो शूट होगी, उसमें 5 एक्टर का काम है। सो द कॉल टाइम ऑफ दैट
5 actors are being used. तो बाकी एक्टर्स ऑब्वियसली वो उस दिन शूट पर नहीं आएंगे. जिसका शूट के दिन काम होता है, दे आर नॉर्मली बीइंग यूज्ड अप और दे आर बीइंग कंसिडर्ड फर्स्ट जब उनका शूट होता है. ठीक है, 5 एक्टर्स हैं, अब 15 का नहीं है, तो ऑब्वियसली 15 उस शूट पर आके अपना डे वेस्ट करेंगे. दे कैन बी यूज दैट टाइम इन सम अदर सॉर्ट ऑफ वर्क. तो ये होता है एक्चुअली कॉल टाइम ऑफ एक्टर्स विच आर नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो डेट्स एक्टर ने दी है प्रोड्यूसर को, सो दे विल गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंगली. कॉस्ट्यूम्स आपको पता होगा कि किसी भी जॉनरा की फिल्म को बनाने के लिए द कॉस्ट्यूम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. नॉर्मली आज के टाइम पर फिल्म्स को बनाने में, सीरीज को बनाने में, नॉर्मली दे आर सो मच ब्रांड्स आर बीइंग अवेलेबल, कि उन ब्रांड्स के कॉस्ट्यूम, उन ब्रांड्स के जो है वो कपड़े काफी ज्यादा यूज अब किए जाते हैं फिल्म्स के अंदर, ताकि उनकी प्रमोशन हो सके. ओके, मगर कभी हमें कोई ऐसा सीक्वेंस दिखाना होता है जहां पर कोई ऐसे की फिल्म के अंदर, नॉर्मली हॉलीवुड में कभी जैसे एक जोकर की फिल्म थी, तो उसमें जोकर का कॉस्ट्यूम डिजाइन करना. कभी अगर कोई हम एंशिएंट फिल्म दिखा रहे हैं, कोई पुराने जमाने की वॉर्स दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके कॉस्ट्यूम उस स्टोरी के अकॉर्डिंग ही होंगे. सो दीज आर द एक्चुअली पार्ट ऑफ द कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स. तो ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स के एक्चुअली पार्ट के अंदर आता है कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करना, और जो कॉस्ट्यूम फिल्म की डिमांड्स के अकॉर्डिंग हो. ओके, सो हियर आई गेस कि हमें यहाँ पर जो है वो एंड करना चाहिए, बिकॉज वी हैव जस्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग फॉर द सेशन टू बी एंडेड. तो यहाँ पर हम एंड करते हैं. आज हमने कास्ट, क्रू मेंबर्स और लोकेशंस और काफी ज्यादा डिटेल चीजों को डिस्कस किया है. आई होप यू गॉट दीज ऑल थिंग. जाने से पहले आई जस्ट वांट टू मेक सम थिंग क्लियर टू यू ऑल. लाइक फर्स्ट थिंग इज कि जो स्टूडेंट्स जो है वो सेशन अटेंड नहीं करते, एंड दे ऑल आर वेटिंग फॉर द रिकॉर्डेड सेशंस ऑन आवर यूट्यूब चैनल. सो एक बात मैं आपको बता दूं, सेशन के अंदर सिर्फ वही चीजें होती हैं जो आप रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, जो कि लेसन के अकॉर्डिंग होती है. मतलब जो लेसन हमारा होगा वो होगी, पर रिकॉर्डिंग से पहले जो 10 मिनट्स हम पहले हम बात करते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स करते हैं, कोई होम टास्क के बारे में डिस्कस करते हैं, सो यू कैन नॉट नो दीज थिंग. आपको वो चीजें नहीं पता होंगी, क्योंकि वो सेशन से पहले हम जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, और फिर हम जो है वो पूरा सेशन रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन विल अपलोड इट. सो आप उन अनाउंसमेंट्स को नहीं सुनेंगे, सो यू विल नॉट बीइंग वर्किंग अकॉर्डिंगली, और फिर एंड में आप ट्रबल फेस करेंगे अपने सर्टिफिकेट्स को लेकर, अपने डिजिटल बैजेस को लेकर. सिर्फ ये चीज मुझे बात करनी थी. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइन टुडे सेशन. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग any sort of technical issues, so email us at technolitrateofficial365 @gmail.com. Thank you so much for joining today's session.